requesting Shri Vishnu Mohan Jha to welcome Shri Tarun on the stage. And everyone, please give a huge round of applause for Mr. Tarun, President Rajasthan Commission Technology Organization. Thank you so much for joining us over here. And now it's time to begin our sessions. Firstly, for the welcome address request, जो मैं तारुण के साथ स्वागत करेंगे नमस्ते. Good evening to all of you. On behalf of Xchange Rajasthan State Development Council, I welcome all of you to this wonderful session. And I think every one of you must be very desperate to hear our stalwart speakers who are going to give you a very good insight about the burning topic of the country, that is the IT landscape, of course, through the startup. And I'd just like to give a just brief statistics, though architects are very bad in statistics. So, it says that almost IT industry contributes to some 7.4% of the total. So it contributes to some 7.4% of the total GDP in the year 2022, and now we're targeting for 10%, if I'm not wrong, right? And the way in which our country is going on, the way in which the startup initiative by the government of India was started in the year 2016, I think after that we have not looked back. So many of you will agree to me, the way in which our startup initiative is being carried out by the young blood of this country, and the main initiative by the government is, they call as it is of the youth, by the youth and for the youth. So, and we being one of the youngest country in the world, and are doing fantastic for the startup initiative, and so do our government is doing a fantastic job. And we, SOCHM, try to act as a conduit between the government and the stakeholders so that, we can put the innovative idea by the youngsters crossing the policy intervention and finally, make it visible. And I think whenever a startup come up with this initiative, so always few things come to your mind. What if an idea comes to you? What if you see a light to that idea? Then what if that idea is really born? Then what if you get someone who actually believe in your idea and help you and nurture it? And what if you set a clear goal, clear path for it? And what if it actually travels? And finally, what when it actually grows and come up like a blossom? This is what the job of our startup people are. And since we are missing our policymakers here because of this election season going on in the state, so there was an unforeseen meeting been called. Otherwise, we would have been very smartly put our point from both the committees, IT and startup, whatever we have in our vision, mind, we would have put forward to them. But yes, we'll definitely go to them personally. It was beyond our control. But I think these are certain burning issues of the country, where our Prime Minister, our government actually is thinking of some 5 trillion economy. And trust me, IT industry and that, with the startup initiative being act as a catalyst, will actually be so I think I should not waste much of your time, because you must be doing fantastic your take homes, because whenever we do any such initiatives, such programs, you always intend that there should be something, which we should take back with us. Because, when you come, you hear something, until unless you do not have some take homes which actually register in your mind for a longer period of time, and finally, which you implement in your business processes, in your entrepreneurship, the
purpose doesn't solve. So without wasting much of time, I would once again like to thank you. And just to give you a small background, this time SOCHM we have come up with vision, air. So air, I mean, is whatever initiative we do, that should have a lot of awareness. A of air. And another thing is the implementation process, because unless you make an awareness movement and then you do not implement it, your purpose doesn't solve. And R, that is the research. If you do not do research in any of your initiative, any of your conference, your committees, nothing is you have better roots. So this time we are working with all the 15 committees, and our main the 3 pillars will be AIR. And we seek your support shoulder to shoulder, so that whatever you have in your creative minds, and if we are actually going to very holistically represent to the government, to the policymaker, so that entire industry can be benefited. So with these words, I again wish you all the best and thank you so very much for coming, and look forward to hear a good session from the stalwart speakers. Thank you. Thank you so much, sir, for joining us over here. And now it's time to introduce our next speaker on the dais. So this time we are going to invite on dais Shri Ravi Modani, sir, founder and CEO, One-to-One Finance and Governing Council member, TIE Rajasthan. Everyone, please give a huge round of applause for Shri Ravi Modani. Good evening, friends. Thank you so much for inviting me as a chair. And this is a very interesting subject in terms of startup, IP, and good partnerships of the government of Rajasthan and SOCHM. So I represent TIE Rajasthan. TIE is a Silicon Valley-based organization which is for fostering entrepreneurship. As you are aware, we handle the startups right from capital stage to funding, mentoring, and across the journey. But what are startups basically? Startups are the sensors of the society. They would try and pick up the need, what's happening in society, the pain points which the society is facing, and based on those pain points and needs, they would generate their own ideas. And not only these ideas, they also react to the societal changes which are happening, right? So, and most of the time, startups are doing the idea based on the local generation. Today, you won't find a startup solving a solution to Kenyan problem, right? A startup would be solving a problem which is local to start, maybe Jaipur, Rajasthan, wherever the ecosystem is. What does a startup, and especially an IT startup, require? IT startup requires a couple of things. One is talent. Number one, a customer, a big customer, regular customer which can do a POC with the startup. Of course, money power, talent, and so who can be one of the best customers for any startup? I remember 2008 when we had this global subprime crisis. Everybody was looking, there's nobody to pay the money, right? And there was one customer, the most strongest customer in the world, and that was the government. So all the governments in the world are the biggest, largest, most strongest customers ever, right? So any startup or any organization who can develop solutions for the government, they have a continuity of the customer, making payments, giving big volumes. And what else can Rajasthan government, in terms of the iStart program also and their startup policy, they have got various schemes where they give you preferential treatment for supply of services. So those are starting points for startups to look into. But there is a lot of evolution happening at the same time. One thing which is happening, so in the biggest IT export from India probably in the days to come would be UPI. So UPI, the foundation of UPI is entirely DPI, which is Digital Public Infrastructure. That digital public infrastructure is made by the government, maybe the central government, even Rajasthan government has their own infrastructure, right?
So based on that structure, infrastructure, that's the easiest way to start a startup, look for local solutions to, give good problem statements and, for example, UPI originally was doing this payment. Today you have got credit on UPI. Yesterday only the RBI announced the offline UPI wherein you don't even have to have an internet connection to make a small payment of UPI, right? So a lot of version of UPI happening right now. There's also an evolution happening from a platform. The IT horizon is changing to networks, open networks. So the first use case has been UPI. The next use case is called OCAN, which is Open Credit Entitlement Network. And the third one is ONDC. So ONDC, most of you have heard about ONDC. OCAN is something which people are not aware much, but that's a product wherein the credit is also being given on our platform, on our network, right? So the biggest use case as of now is GEM SAI. So GEM again is a government supplier. People who are supplying to government, they have a portal called GEM. And the entire network, as a lender, you just latch onto the network and you finance the transaction across the country. So now the evolution is happening from a platform to open networks, from Amazon to ONDC, right? So, and there's like, for example, RBI is doing an own open platform where they are trying to finance the milk farmer based on the data which has been generated by the corporate societies. So all this is happening into open networks. These are bigger opportunities for these startups to look into rather than making their own platforms, their own, closed loops, which was the thing in the past. Similarly, even if you talk about IoT and the AI in future, they will also be part of the networks. You need to have interoperable networks in terms of talking to each other, making networks scalable. One interesting point, Indrajit could not make it today, but very interesting point. He mentions some time ago, 17% of the IT profession in the country are from Rajasthan, right? And so people from Rajasthan are doing the work across the country. So why can't they come back to Rajasthan? We have got talent. There's a company which I'm chartered accountant in Jaipur. In Jaipur, you can boast now with Deutsche Bank, Xchange, Genpact, everything is here. So why not? This could be the startup and the IT capital again. Especially in terms of the new evolutionary thing which is happening, whether it's payments, UPI, digital credit, digital infrastructure, I would say is a strong thing to look after. That's why message for startups that government is the biggest customer. Look for DPI products, make solution around DPI. You don't have to spend money to anything over there. Everything is available by the government free, whether it's Jan, Aadhaar, whatever we call it. You can just latch on to those platforms or networks and make a product. That's my message to startups. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir, for joining us over here. And in this knowledge session, हमारे next speaker जिन्हें हम stage पर invite करने जा रहे हैं, he is Shri Tarun, President, Rajasthan Information Technology Organization. So please, everybody, put your hands together and welcome on dance Shri Tarun. शुभ संध्या। मैं तरुण टांक, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान करके एक एनजीओ है, उसका प्रेसिडेंट हूँ। और इसके साथ साथ मेरी आईटी वॉइस करके भी एक और संस्था है। मल्टीपल मेरे आईटी के बिजनेस भी हैं, कॉल सेंटर्स भी हैं, पूना ऑफिस भी है। आईटी का काम 25 ईयर से ज़्यादा हो गया। और जब हमने आईटी के काम की मैं बात करता हूँ तो हमारे एक कोर्स चला करता था जिसको हम कहते थे एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि यूथ के लिए एंटरप्रेन्योरशिप होती थी। आज यूथ के लिए एक नया वर्ड है स्टार्टअप्स। और स्टार्टअप्स के लिए द थिंग्स इज दिस कि हमारा हिंदुस्तान आज बहुत बड़ा यूथ सेंट्रिक है। आज आईटी के क्षेत्र में हम जो बात करते हैं, आईटी के क्षेत्र में आपको इतना सा बताना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर लैंड या किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ी कॉस्टिंग लैंड की है। बट व्हेन यू स्टार्ट ए आईटी बिजनेस तो आपके पास में मशीनरी और लैंड की कॉस्टिंग बहुत कम होती है, रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, राजस्थान में अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। द सेकंड थिंग मैं आपको कहना चाहूँगा कि आईटी के क्षेत्र में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो अपना एक पूरा का पूरा मानना है कि जो उनको 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी बनानी है, उसके अंदर सबसे बड़ा सहयोग आईटी का ही रहेगा और राजस्थान उसमें सबसे ज़्यादा अग्रणी रहेगा। मैं इसके लिए दूसरी चीज़ भी आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी कितनी चलती है। अगर हम सोचेंगे
तो ये परसेंटेज आता है ऑलमोस्ट 11.5%। और इस क्षेत्र को देखते हुए सरकार ने एक ऐप भी निकाली है जिसको कहते हैं भाषणी। आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट नो द इंग्लिश, इफ़ यू डोंट नो द अदर लैंग्वेजेस, अदर स्टेट्स, तो भाषणी के थ्रू आप ये काम कर भी सकते हैं। पैरेलली अब एक और सारे स्टार्टअप्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी है। टिल डेट हम सारी चीज़ देखा करते थे, हमारी सरकार, गुजरात की सरकार हो तो गुजरात में लेटर लिखती है पर नीचे उसका डोमेन नेम इंग्लिश में होता है, बंगाल में होगी तो डोमेन नेम इंग्लिश में होगा, मेल आईडी इंग्लिश में होगा। बट निक्सी के साथ में मिलकर इन्होंने आईकेएम के साथ में वर्क किया और अब हमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम आज 17 लैंग्वेजेस के डोमेन्स के अंदर वर्क कर सकते हैं। नाउ यू कैन वर्क विद द डोमेन नेम ऑफ .भारत, इट विल गिव यू प्राउड। आपको .in नहीं लिखना, अब आप लिखेंगे .भारत। आज IT-voice.भारत लिखा हुआ रहता है, Jio.भारत होता है, पत्रिका.भारत होता है। क्यों? क्योंकि उनको जो बिजनेस करना है उनको अपने एरिया में करना है। इफ यू गो इनटू द राजस्थान, वी आर सिटिंग इन जयपुर, we can talk in English, we can work in English, everything is there. But far 50 kilometers, 100 kilometers, वहाँ क्या होगा? आपको जोधपुर की भाषा अलग मिलेगी, बीकानेर की अलग मिलेगी, और हम वहाँ पे उस बिजनेस को नहीं कर पा रहे। You just go and see, अमेज़न ने क्या किया, फ्लिपकार्ट ने क्या किया। उन्होंने अपने पोर्टल के ऊपर मल्टी लैंग्वेज के अंदर प्रोडक्ट्स को दिखाना चालू कर दिया। They captured this opportunity, but we missed. मैं सारे यूथ को कहूँगा कि द थिंग विच गवर्नमेंट से, निक्सी से हमें मिली है, स्टार्ट वर्क इन मल्टीलिंगुअल। उसके अंदर जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है उतनी अपॉर्चुनिटीज और उतना बिजनेस आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं इसी की बात क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि मैं हूँ बाई ब्लड, मैं गुजराती हूँ, बाई बॉर्न राजस्थानी हूँ, आई एम ए मिक्स ब्रीड, और मेरा एक ही वर्ड है, मैं बेरोजगार हूँ, बेकार हूँ, बेघर हूँ। क्योंकि गुजराती में क्या ये मिक्स वर्ड में एक होता है, गुजराती में 2 चीज होती है, एक बे त्रण, बे को 2 कहते हैं। तो मेरे 2 घर हैं, 2 व्यापार हैं, 2 रोजगार है, 2 कार है। तो इट्स अ थिंग, आप किसी भी नेगेटिव वर्ड में से आप पॉजिटिव थिंग्स निकाल सकते हैं। फॉर दिस थिंग मैं ये कहूंगा कि स्टार्टअप्स, हमारे यूथ के जो आइडियाज हैं, ओनली वर्क, इफ यू वर्क फॉर द 1000 days, आई कैन श्योर यू आप 100% सक्सेस करेंगे। बट योर आइडिया, गोल एक ही होना चाहिए। डोंट डिस्ट्रैक्ट विथ योर गोल। आप किसी और को देख के अपने गोल को बदल लेंगे ना, यू विल नेवर रीच योर टारगेट। थैंक्स। Thank you so much, sir. And now for the next speech, for the next information sector, हम invite करना चाहेंगे स्टेज पर श्री संदीप जैन, चेयरमैन एसोचैम RSDC Committee on Information Technology. And please everybody put your hands together for Shri Sandeep Jain. So first of all, good evening everyone. I welcome all the dignitaries here and all of you. So today's event Tech Xchange जो है it's all about startups and IT, and there are startups जो IT से हैं, non IT से भी हैं। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, और उस समय स्टार्टअप टर्म कोई नहीं थी, जैसे तरुण जी ने भी बताया, देयर वाज नो टर्म कॉल्ड स्टार्टअप। तो 28 साल पहले जब मैंने बिजनेस शुरू किए थे, एंड देन वी आर फॉर्चुनेट द वे वी हैव ग्रोन, एंड देन जहाँ पे अभी आज हम पहुँचे हैं, देयर इज लॉट ऑफ इकोसिस्टम हैज डेवलप्ड अराउंड स्टार्टअप्स, व्हिच इज अ गुड थिंग। और इसमें जो स्टार्टअप्स आप लोग कर रहे हैं उसमें आप लोगों की मेहनत है। हमारी जनरेशन से मैं हमेशा कहता हूँ, यंग जनरेशन का जब इंटरव्यू लेते हैं कि दिस जनरेशन इज मच बेटर एंड कैरियर फोकस देन आवर जनरेशन। हमारी जनरेशन तो कॉलेज निकलने के बाद सोचती थी कि अब क्या करना है। सो दिस इज वेरी गुड थिंग। अनदर थिंग इज द इकोसिस्टम दैट हैज गॉट डेवलप्ड नाउ। सो गवर्नमेंट का जो इकोसिस्टम है, एसोचैम के प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल अदर प्लेटफॉर्म्स, यू गेट मेंटरिंग, गेट फंडिंग, एंड देन डेफिनेटली गेट अ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। व्हेन आई लुक एट आईटी, जैसे अभी रियल एस्टेट है वैसे आईटी है हर बिजनेस के लिए। इनफैक्ट अगर थोड़ा और आगे बोलूँ तो रोटी कपड़ा मकान, चौथी चीज़ अब आईटी ऐड कर सकते हैं, उसके बिना लाइफ नहीं है। सो दिस इज वेयर आईटी इज राइट नाउ, एंड एज ए स्टार्टअप इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लीवरेज आईटी फॉर स्टार्टअप्स, किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, और बीट एनी अदर इंडस्ट्री।
So today जो आज हमारा इवेंट है, there will be couple of sessions and then हम लोग कुछ इंटेंट ऑफ MOU भी साइन करेंगे जो established इंडस्ट्री है और जो स्टार्टअप्स उनके बीच में कोलैबोरेटिव इंटेंट ऑफ MOU also we will sign and then I believe that आज के sessions will be enriching sessions for all of you. It will be learning experience and it will boost the startup ecosystem. So thank you all and welcome you again. Thank you very much. Thank you so much, sir. And now for the next one, requesting Shri C.B. Sharma, retired IPS, Chairman SHMRS DC Committee on Cyber Security. Please come and join us on dais. And everybody, please give a huge round of applause for Shri C.B. Sharma. आर्किटेक्ट तुषार सोहानी जी, मोदानी जी, टोंक जी, संदीप जी जैन, झा साहब और सरकार अनुपस्थित है, अनुपस्थिति में भी दलजीत सिंह जी का अभिवादन। आप सभी यहाँ पधारे और मुझे मौका मिला कि आपसे बात करूं, लेकिन जिस सरकार से बात करनी थी अपन सबको, वो सरकार कहीं और भेजते हैं। साहब, एक बात मैं बताऊं, मैं करीब 36 साल तक सरकारी सेवा में रहा हूँ। उसके बाद में तो स्टार्टअप की और मेरी उम्र एक ही है। 2016 में स्टार्टअप आया और 2016 में ही मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन IT सिक्योरिटी ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी। तो मेरे ख्याल से मेरी स्टार्टअप की उम्र एक ही है। हालांकि आप तो बहुत पुराने इंडस्ट्री के अंदर सीनियर हैं और पिछले 1 साल से मैं एसोचैंज से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे 3 मौकों के ऊपर शिरकत करने का मौका मिला और तीनों ही मौकों में सरकार नाराज थी। कितनी सा मौका। तो निवेदन ये करना चाहूँगा कि सरकार को इतना टाइम नहीं है तो कृपया न आए सरकार, बिना सरकार के चलाते हैं, कोई उसके अंदर दिक्कत की बात। खैर चलिए, ये तो बात एक है। क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं समय पर आ जाता हूँ, पर वो समय पर क्या बाद में तक नहीं आते हैं। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही सुंदर टॉपिक और समसामयिक विषय है। समसामयिक इस हिसाब से है कि अभी 2 दिन पहले 7 अगस्त को सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल IT का जो मेन रोल है, दैट इज रिलेटेड विद डेटा। एनी इंफॉर्मेशन is prepared in a formalized manner, processed in the computer resource system, and ultimately stored in the memory of the internal memory of the computer resource. So that is the data. तो डेटा और IT रिलेटेड है। और देखिए, ये स्टार्टअप और IT इनका कॉम्बिनेशन तो बनाया है, लेकिन ये फेल हो रहे हैं। IT के जो स्टार्टअप्स हैं वो करीब 90%, क्योंकि मैं इस सेक्टर में हूँ, तो इस सेक्टर के अंदर 90% बिल्कुल विदिन 2-3 ईयर्स, शुरू में जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत उत्साह रहता है उनमें। उत्साह रह के वो नए स्टार्टअप खोलते हैं। मेरे पास 5-4 स्टार्टअप बंद करके वो अप्रोच करके कुछ को करके, क्योंकि ये IT में और स्टार्टअप का देखिए 2 चीज़ एक है, मैं बताना चाहूँगा आपका। एक तो अदर स्टार्टअप्स में IT का रोल और एक IT का ही स्टार्टअप, दोनों में अलग अलग है। अदर स्टार्टअप्स में तो IT बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत हेल्पफुल है। रीजन बीइंग
it has a speed, it's the high speed data processing and इसकी मेमोरी बहुत हाई है, मैन पावर को बचाती है, आपके जो फाइनेंशियल के अंदर आपका बचत करती है, तो उनके लिए तो ये मुफीद है, लेकिन आईटी वालों के लिए मुफीद नहीं है। और उसके अंदर भी यदि आईटी का नॉलेज नहीं है, कुछ समय बाद नुकसान उठा क्या। बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर आईटी को आपने यूज तो कर लिया, लेकिन यदि सिक्योर आईटी नहीं है आपके पास तो उससे नुकसान उठाते हैं। देखिए, दो महत्वपूर्ण इनके वो हैं कि एक तो आईटी के अंदर आपका डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन सेफ हो और उसके बाद में आप किसी क्राइम के कर्सेज में नहीं आए। बहुत डर लगने लग जाता है आईटी से, डरते हैं आज। जो भी मेरे मित्र हैं इंडस्ट्रीज में, जैसे आईटी के अंदर, तो वो उनके कहते हैं साहब हमारे आईटी वाला है, वो हमारे काबू में नहीं है, हम डरते डरते से वो करते हैं, वो जो कह देते हैं वो ठीक है उस हिसाब से। तो ये जो नया एक्ट आया है, मैं दो ही बात आपको निवेदन करूँगा। तो दिस इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, द पर्सनल डेटा इन द डिजिटल फॉर्म। और इस प्रोटेक्शन के लिए खास बात क्या है जो कि आज इंडस्ट्रीज के अपन एसोसिएशन की यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं। छोटा सा एक्ट है, 44 सेक्शंस हैं, लेकिन उसमें जो फिड्यूशरी नाम दिया हुआ है, जिसके पास आपके पास डेटा है, प्रिंसिपल डेटा है, उसके कई सारे ऑब्लिगेशंस हैं और उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करते हैं तो हैवी पेनल्टी टू द ट्यून ऑफ 250 करोड़, अप टू 250 करोड़। सो इन ऑब्लिगेशंस के बारे में ऑब्लिगेशंस है, मैं सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा, एक बार अपने आईटी का को भी करना है। आप उससे कहते हो कहते हैं कि इसके ऊपर ऑब्लिगेशंस है, नए एक्ट के आप इस ऑब्लिगेशन के बारे में आपको जरूर बताएं कि क्या क्या ऑब्लिगेशन दस क्या है, वरना कभी अपन ऐसा लेकिन कर लें किसी तरह का बहुत सुनता है, लेकिन मालिक को जो चलाता है स्टार्टअप, उसको जानना नहीं है, बड़ा वो स्टार्टअप है। मेरा इसका आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ। खास करके सोगानी साहब का और मोदानी साहब का, क्योंकि मैं जब शुरू में 1980 में यहाँ पुलिस की नौकरी के अंदर जयपुर शहर में था, तो ये जो स्टूडेंट थे और लेट टाइम तक के स्टूडेंट थे, तो हमारी मुलाकात ये नेतागिरी उस समय भी करते थे। अब अध्यक्ष हैं, मेरे टाइम में सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो सर मैं सही हूँ, उस समय ये MNIT के अंदर सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो आज आपसे मिलने का मौका मिला, अच्छा लगा। अब मेरे लायक कोई भी काम हो, क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी ऑडिट के अंदर हूँ। साइबर सिक्योरिटी ऑडिट का मतलब वी असेस द वल्नरेबिलिटीज इन द IT सिस्टम and do the penetration testing and then suggest some solutions for that. तो कोई भी हो तो एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म के अंदर यदि कोई आता है तो हमने सो मोटो कुछ उनको रिलीफ देने की, जो बताने की नहीं है, हम अपने लेवल के ऊपर दे देते हैं, कोई उसके अंदर नहीं। मेरे लिए कोई भी कार्य हो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन खास शब्दों के लिए। एंड नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस द लास्ट स्पीकर ऑफ दिस सेशन, एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू इनवाइट ऑन माइक श्री विष्णु मोहन झा, co-chairman एसोचैम राजस्थान स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एवरीबॉडी एंड वेलकम ऑन डायस श्री विष्णु मोहन झा। Good evening and namaskar to all. You know, when I looked at the name of this conference and navigating IT landscape through startup lens,
And why I talk of navigation? Because being from aviation, people think that it's important for airplanes to land. But to be honest with you, you are in high seas or in a forest or searching for your home in a new city, navigation plays a key role. And looking at the vision that the Prime Minister always speaks about, Atmanirbhar Bharat, 5 trillion economy, and so that cannot be achieved till it becomes a mass movement and a lot of people join in and collaborate to get there. Having said that, I stand here today as a proud and a grateful student to express my heartfelt thanks to all of you who are the engines of economic growth. And why do I say that? Because if you look at a lot of large industries, they have it becomes difficult to innovate for larger. The bigger the business, difficult is innovation happening. But when you're starting up, it is the right platform to start. Your initiatives, commitment, your endeavor to excellence will navigate the script of such a new India. And why we say New India? Because during this period, we are in the Amrit Kal, Azadi ka Amrit Kal, it's spoken about very frequently today. And why do we say that? A lot has been done or not done in the past many years. But today we stand at a juncture that we can leapfrog or pole vault instead of organic growth, in terms of doing various things. To achieve this dream, adoption of new technologies like artificial intelligence, data analytics, machine-to-machine communication, Internet of Things, robotics, startup ecosystem. So why? Basically, I tell you what, when you talk about environment, कुछ भी अगर आपको you want to grow rice, you want to grow rose, any कुछ करना environment बनाना पड़ता है. So today, the environment, the ecosystem is fully ready to support the startups. And I think with the Xchange's, when I started reading it, it said ideate, innovate, and impact. So it is the time of ideas, it is time for innovation, and if you really have a great idea, I think nothing is going to stop. And there are thousands of requirements for that in the country today. These game-changing technologies we speak about is soon become a new normal in India with the support of people like you all over here. Adoption of new technologies will be more crucial for SMEs and medium businesses rather than large-scale enterprise units. We talk of IT, so I think everybody spoke about it, so not much on that, but I would say that for a startup business, in that there's a huge amount of scope. In this scenario, Rajasthan has already achieved a milestone in building a vast startup ecosystem, and Rajasthan State of Policy 22, that will be a major booster of economic growth in the state and in the country. As the Prime Minister says, strategy for New India has 3 key messages. First, the development must become a mass movement. And these conferences, these meetings, ideations play a role in spreading it to a larger base. Second, development strategy should help achieve broad-based economic growth to ensure balanced development across all sectors. Third, the most important strategy implementation should bridge the gap between the public and the private sector. So if you see public-private partnerships were very not heard of 20 years back, but then slowly you will see a lot of businesses. It is happening, really working well between the public-private, the government and the private enterprise. And today's event organized by Xchange includes all the 3 messages of New India. Through such events, Xchange brings innovation, technology and enterprise and efficient management together on a common platform. And that being said, I would say that the support system, that the ecosystem that is provided by Xchange, people can leverage and use for developing their own ideas and products. There is a chance that if you think of something that brings up to a larger group, new things can happen. I once again thank all the dignitaries, experts and stakeholders for imparting their wisdom, knowledge and nurturing the talent to achieve the global competence. Your unwavering support has been instrumental in growth and development of society in the nation. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir, once again. And after this wonderful session, it's time for a short tea break, just for 15 minutes. And after this tea break, we'll continue with a wonderful panel discussion. So we'd like to request everybody, please have some tea and come back on time after 15 minutes for panel discussion. Thank you so much.